Hello students, welcome to your economics class for class 11th. Today we will discuss the very basic, very first chapter of your economics. We'll start that chapter, and what is that? The basic meaning of economics. First, to study any subject, you first have to understand that meaning of that particular subject. What does that subject wants to tell you? What knowledge it wants to give you? So today we will understand what does that subject mean. Our subject is economics. So first we have to understand what is economics. क्या होती है economics? Economics is study. It's a study. It's not a subject. It's a study. Study of what? It's a study of economic issues. It's the study of economic issues. And what are those economic issues? Very basic answer. What is economics? Economics is a study of economic issue. But the question arises, sir, what are economic issues? होते क्या है economic issues? So economic issues or economic problems, whatever you can say, it is also known as economic problems. Economic issues are also known as economic problems. So what are those economic issues or economic problems? Economic issues or economic problems are problem of choice. It's a basic problem of choice. And why does this problem of choice arise? Because of the fact that our wants are unlimited. Our wants are unlimited. We have unlimited wants. As a human being, we have unlimited wants. And to satisfy these wants, we require some resources. We require some resources. And these resources are limited. Wants are unlimited. But to satisfy these wants, resources are used and these resources are limited. So this is a problem. And, uh, uh, and with these resources, with the limitation of these resources, with the scarcity of these resources, there is another fact. And what is this? And what is the fact? That these resources have alternative uses. Alternative uses, what does that mean? Alternative uses mean that these resources can be used in various other forms. Alternative uses, other options. When we have options, we can say alternative uses. So what is the problem of choice economic problem or economic issue? Let's sum up. What is economic problem or economic issue? That our wants are unlimited, and to satisfy these wants, we require some resources, and these resources are limited. These resources are limited. Okay? And these resources have alternative uses. So let's take an example. Let's understand this concept with the help of an example. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं. उस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो. कैसे? हमारी वॉन्ट्स हैं अनलिमिटेड. ठीक है, हम चाहते हैं हम ये भी खरीद लें, हम वो भी खरीद लें. ठीक है, हम कुछ बाहर खा भी लें, हम मूवी भी देख लें, हम टी शर्ट भी खरीद लें, हम शूज़ भी खरीद लें, हम फ़ोन भी खरीद लें. ठीक है, ये हमारी वॉन्ट्स हैं. दीज आर आवर वॉन्ट्स. एंड टू सेटिस्फाई दीज वॉन्ट्स, what do we require? We require some money. Okay, but as you all know, we don't have unlimited money. We have limited money. And this money, our wants are unlimited. And to satisfy these wants, what we require? We require a resource. In our case, in our example, that what is that resource? That resource is what? Money. And we have limited resource. Yani we have limited money. And resource have alternative uses. In our example, money can be put to different uses. What does that mean? Money can be used to buy t-shirt.
money can be used to buy snack, money can be used for movie, for watching movies, money can be used for buying mobiles, or etc etc. For all these purposes money can be used. So money have alternative uses. So now economic problem arises. What is the problem of choice? What do we do with this limited resource? What do we do with limited amount of money? क्या कर सकते हैं हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से? क्या हमें टी शर्ट खरीदना चाहिए? क्या हमें हमारा स्नैक खाना चाहिए? क्या हमें फ़ोन खरीदना चाहिए? क्या करें? इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से हम क्या करें? इस लिमिटेड रिसोर्स से हम क्या करें? दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए. एग्जांपल है लैंड का. ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल है. मान लीजिए आप गवर्नमेंट है, आपके पास लैंड है, ठीक है, और आपकी वांट्स है अनलिमिटेड. ठीक है, आप इस लैंड को, इस लिमिटेड लैंड को क्या कर सकते हैं? आप इस पे स्कूल भी बना सकते हैं, आप इस पे हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, आप इस पे फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, आप इसको एक घर बनाने की, एक बिल्डिंग बनाने की जिसमें लोग रहें, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अलग अलग तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. तो आप क्या करेंगे? अब आ गया है आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. इस लैंड को हम कैसे यूज़ करें? इस पे फैक्ट्री बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, रहने के लिए बिल्डिंग बनाए, क्या करें? ऑल्टरनेटिव यूजेस. तो क्या आ गई आपके पास में? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. So it's a so now coming back to the topic, what is economics? Economics is a study of economic issue. इस इकोनॉमिक इशू, इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स. हमें ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा कि ह्यूमन को कैसे हम स्टडी करें कि इसकी इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. अलग अलग सिचुएशन में, इन डिफरेंट सिचुएशन, what has to be done, how the economic problem can be resolved. This is the concept, this is the whole study, what that is known as economics. Economics can be grouped into two parts, microeconomics and macroeconomics. Micro means small and macro means large. When economic problems are studied at the level of small level, at the level of an individual, a single individual, at the level of a single producer, then the whole concept is known as microeconomics. जब छोटे लेवल पे, छोटे स्तर पे जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम डिस्कस की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं, तब इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है. माइक्रो, स्मॉल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा होगा साइंस में. ठीक है. And when all these problems are discussed or studied at the level of a country has a whole, तब इस कॉन्सेप्ट को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. मतलब मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तब प्राइम मिनिस्टर एक इंसान के बारे में नहीं सोचता कि इस एक इंसान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. What the prime minister thinks? What the prime minister thinks is how the problem of a country can be solved. So when the economic problems, प्राइम मिनिस्टर ये नहीं सोच रहे कि एक इंसान का अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर किया जाए, वो सोच रहे हैं कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जाए, ये सोच रहे हैं ना. तो व्हेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर स्टडीड एट द कंट्री लेवल, एट लार्ज लेवल, country as a whole, then then that study is known as macroeconomics. Micro and macro. Economic problems are studied at small level. जब छोटे लेवल पे बात की जाएगी तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और जब बड़े लेवल पे बात की जाएगी तो उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे. दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है. मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके कोर्स में नहीं है, 11th के कोर्स में नहीं है. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीड एट 12th standard level. Microeconomics is included in 11th standard level. So we'll discuss microeconomics in the upcoming classes. How a single individual behaves
in different situation. We have to study that behavior. We have to study how a single individual's problem can be resolved. Economic issues can be resolved. So we have to discuss that. So we'll discuss all those things in the upcoming classes. That's all for today. Thank you.